Today we will study regarding the gross total income. What do you mean by gross total income? According to Income Tax Act 1961, gross total income means the total income, the aggregate of total income computed under the following head. According to Income Tax Act IT Act 1961, gross total income means the aggregate of the income of the following heads. Number one, income from salary. Number two, income from house property. Number three, income from PGBP. Number four, income from capital gain. Number five, income from other sources. So, according to Income Tax Act, there are 5 heads. The total income of a person can be classified under 5 broad heads, and the total income of these 5, the aggregate income of these 5 heads is called gross total income. What do you mean by income from salary? When any person is engaged in any employment and getting salary, when the relationship between two persons is employer and employee, and the employer paid remuneration to the employee for service rendered, that is called salary. The service may be temporary, may be permanent, may be government, may be private, whatever may be. But when there is a employee-employer relationship exists, then that income will come under salary. First income, मने करो मिस्टर एक्स अच्छी, मिस्टर एक्स गोटे पार्ट टाइम जॉब करिछि, मिस्टर एक्स गोटे पार्ट टाइम जॉब करिछि, तार मासको 10,000 सैलरी. तो वर्षरे केते हबो ना इनकम फ्रॉम सैलरी को केने तार 10,000 पर मंथ, 10,000 into 12, तो 12 मास रे सैलरी इनकम हेगा तार 1,20,000. तो सैलरी इनकम हेगा 1,20,000. Then second is income from house property. मिस्टर एक्स रो 3टा घर थिला, से गोटे घरे रहउची आ 2टा घर भड़ा देउची. तो 2टा घर तार बर्जा रे रेंट आसला 2 लाख. Clear? So Mr. X is doing part-time job with a company who is paying 10,000 salary. So the annual salary will be 1,20,000. And Mr. X is having 3 houses. One house is used for residential purpose. Another 2 houses are given in rent, and the rent for the year is 2 lakh. Income from PGBP. Income from PGBP, profit and gain from business and profit. Any type of business, छोटो business रू बड़ो business करो, whatever may be, income from PGBP. Mr. X गोटे छोटो दुकान करी गोटे किराना दुकान करछि, सी ऑफिस रो सब जहां टाइम मिले से किराना दुकान बसे, वर्षा रे किराना इनकम होछि 3 लाख. Whatever may be, PGBP, profit and gain from business and professions. Whatever may be the business, may be temporary, may be permanent, may be short term, may be long term, may be small scale, may be large scale, whatever may be. When there is any income from the business and professions, that is another head. Income from capital gain. Capital gain means what? Capital gain means by transferring the capital asset, we can get capital gain. For example, Mr. X गोटे घर किनिथिला 50 लाख टका रे 3 मास ପରେ से घरटा 52 लाख टका रे बिकिला. ता माने 50 लाख रे किनिथिला 52 लाख रे सेल कला. ता माने केतना लाभ होला? 2 लाख लाभ होला. सेटा को कैपिटल गेन. माने करा कैपिटल गेन इनकम होची 2 लाख. Then income from other sources. The income which will not come under any of the 4 heads,
that will come under income from other sources. So income from other sources, that head is called as residual head. Residual head. Why this is called residual head? Because the income which will not come under above four head, that will come under income from other sources. For example, interest income, dividend income, renting of machinery, renting of room. जदि हमें घर भड़ा देइछे ताले हाउस होल्डर पर आसीबो, किंतु मोर ट्रैक्टर भड़ा देइछे, मोर ट्रक भड़ा देइछे, मशीन भड़ा देइछे, सब कोड आसीबो, से सब तमर पिला माने आसीबो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल इनकम, गैम्बलिंग रो इनकम, बेटिंग रो इनकम, ए सब जगह आसी माने गायरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है. बिकॉज़ ए जिंस गुडा को ए चार्ट हेतु कोन से फोन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माने टोटल इनकम होला 80,000. That means gross total income कितना सिला 1,20,000 plus 3,20,000 6,20,000 8,20,000 9,00,000. That means gross total income of Mr. X is 9,00,000. How gross total income will be computed? The gross total income will be computed by aggregating all the heads. Normally, according to Income Tax Act, the total income of a person can be categorized into 5 heads: income from salary, income from house property, income from BCBP, income from capital gain, and income from other sources. Aggregating of all the income is called as gross total income. माने करो एटा में मिस्टर एक्स का चिंता करते हैं, मिस्टर एक्स रो माने करो मिस्टर वाई अछि से केवल चाकरी करछि, मिस्टर वाई कथा मन मिस्टर वाई चाकरी करछि, ता दरमा 3 लाख, तार कोनोसी घर पड़ा आसनी, तार कोनोसी बिजनेस नाही, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किछि नाही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तार लॉटरी रो मनर 50,000 का इनकम हेतिला, ता माने तार ग्रोस इनकम केते, ग्रोस इनकम होछि 3,50,000, ग्रोस इनकम होछि 3,50,000. दैट मींस व्हाट ना ग्रोस टोटल इनकम कोया होतिले ए पांचटा तक इनकम जमा के विच गारंटी नाही. One person will have 5 income, not like that. जहाँ भी इनकम अछि टोटल करो, जदि 5,000 हेड अछि 5,000 मिसिबो, आर 2,000 मिसिबो, कार खाली सैलरी थिबा किछि नथिबो, तार खाली सैलरी हबो, कार खाली पीजीबीपी थिबा किछि नथिबो, तार खाली पीजीबीपी हबो, तार खाली कैपिटल गेन थिबा किछि नथिबो, तार कैपिटल गेन हबो. तो जदि गोटे लोकर सब जाक इनकम अछि ताले सब जा मिसर जेतुटा भी अछि सेट्रा मिसि जोडा सेटा होते ग्रोस टोटल इनकम. तो व्हाट डू मीन बाय ग्रोस टोटल इनकम? Gross total income is the total income of all 5 heads, that is income from salary, income from house property, income from PGBP, income from capital gain, and income from other sources. Clear? Please note it down. तो पिलाने एबे देखिबा rounding of income. Rounding off of income. What do you mean by rounding off? Rounding off means the total income of an SSC will rounding off to nearest rupees 10. That means what? माने करो मिस्टर एक्स रो टोटल इनकम आसिला 9,78,452. माने करो मिस्टर एक्स रो टोटल इनकम आसिला 9,78,452. एटा होची टोटल इनकम एटा होची राउंडिंग ऑफ. मिस्टर एक्स रो टोटल इनकम से 9,78,452, तार राउंडिंग ऑफ किती हो 9,78,450. दैट मींस द टोटल इनकम इन एसएससी विल बी राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 माने हमर जो टोटल इनकम आसिला 9,78,452 वर्ष भीतर मिस्टर एक्स इनकम करिछि, एतिक रो हमको टैक्स कैलकुलेशन करिया पे हमको भल लागले से नियरेस्ट 10 रे लास्ट डिजिट दिबा होबा जे नियरेस्ट 10 माने 52. लास्ट 2 डिजिट देखियो ए डिजिट रो नियरेस्ट 10 केनो 50. माने को मिस्टर वाई अछि, मिस्टर वाई रो टोटल इनकम होला 4,23,781. ता माने राउंडिंग ऑफ किती आसबो ए डिजिट देखियो 4,23,780. माने
करो मिस्टर जेड अछि मिस्टर जेड रो 6,03,228 तामने राउंडिंग ऑफ किमे दिबो लास्ट 2 28 माने 6,03,230 बिकॉज़ 28 रो नियरेस्ट टर्म कोन 30 माने ऊपर को गला 81 नियरेस्ट कोन 80 माने तळको आसला जदी नॉर्मली लास्ट जो 5 थाए तामने तळको जदी 6 नु 9 के थाए 4 1 टू 5 के थी बोली गले तळको 6 टू 9 के थिले ऊपर दैट मींस व्हाट 5 प्लस जदी 5 ऊपर गला तामने तमे राउंडिंग ऑफ टू नेक्स्ट जदी 5 तो तळ रहला जदी मन एडा कोन ला 81 82 83 84 इनि थिबो तामले तळको जदी 86 87 88 89 इनि जसा तामले ऊपर मन आउ दे मिस्टर ए रो इनकम मन रहउची 5,29,736 ताने 36 रो नियरेस्ट टाइम केते 740 like that the total income of an SSC should be rounded off to the next 10 nearest 10 not next 10 nearest 10 ता माने 36 रो पाखा पाखी 10 कोडा 40 28 रो पाखा पाखी 10 30 81 रो पाखा पाखी 10 केते 80 like that तो लास्ट जी 0 करे अछि तापर हम देखिबा rounding of tax section 288b rounding of income section 288a rounding of tax section 288b माने करो मिस्टर पी कोटे लोक अछि जार की टैक्स इनकम को हम जे टैक्स हमें स्लैब रेट पकेले टैक्स और रेट पकेले अप टू 2.5 लाख मिल 2.5 लाख to 5 लाख 5% 5 लाख to 10 लाख 20% more than 10 लाख 30% सब पकेला करे मिस्टर पी रो आसीला 78,482 टैक्स जदी तार टैक्स 78,482 ताहले गवर्नमेंट माने केतना टैक्स हवा अछि 78,480 टैक्स गवर्नमेंट हबो माने करो मिस्टर क्यू रो माने करा आसीला 91,998 ता माने 91,998 रो नियरेस्ट केते 100 98 रो 100 माने एबे देख 98 रो 100 माने तीनटा हबो जे पहले ता माने कहे जो 92,000 काहे 92,000 91,998 रे 2 डिजिट दियो नियरेस्ट ना ता माने एडा गोटे सिंगल डिजिट ऐड करी जीरो आसे पई माने किछ लेस करी जीरो आसे पई ताई हम 2 मिसले जीरो हो जाउची त माने 2 मिसले जीरो आउ रेट माने जीरो 1 है जीरो 92,000 तला माने करो मिस्टर आर अछि मिस्टर आर माने आसला टैक्स अब कोन पड़ला 13,296 ता माने तार केते हबो 13,096 माने 100 माने 300 इला 13,300 like that बुझा पड़ला ता माने according to income tax act the total income as well as tax liability should be rounding off to nearest 10 आमे लास्ट जेटा नियरेस्ट 10 कर देले हमको कैलकुलेशन करिवे सुविधा हेतु सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहूची कि हमर टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी शुड बी राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 होला प्लीज नोट इट डाउन चला देन आमे देखिबा टैक्स प्लानिंग tax planning means what? Tax planning means combination of two words tax and planning. Thus, it is necessary to understand the meaning of these two terms before embarking upon the tax planning.
Tax planning is an arrangement of one's financial affairs in such a way that the burden of taxation of the SSC is reduced to the minimum without violating in any way the legal provision. That means what do you mean by tax planning? Tax planning means planning the tax liability, planning the total income of an SSC so that the total liability, tax liability should be reduced, but without violating the tax law. टैक्स प्लानिंग माने कोन टैक्स प्लानिंग गोटे पॉजिटिव टर्म टैक्स प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड टैक्स एंड प्लानिंग द टैक्स इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू reduce the tax liability or reduce the burden of tax of the SSC without violating the tax law टैक्स रूल न भागे कि हमें न ठके कि फ्रॉड न करे कि हमर इनकम रो टैक्स केते कम दबा हमें कोन गले गवर्नमेंट को टैक्स कम दबो पड़िबो सेटा होचे टैक्स प्लानिंग. Then the Income Tax Act provides for certain sections which allow a person to save tax legally by adopting the path shown in the sections. Income Tax Act किछि रूल करछि जो रूल गुडा का हमें फॉलो करले हमको टैक्स कम दबो पड़िबो जेमिति कि हमर किछि डिडक्शन अछि किछि एग्जाम्पशन अछि तो से डिडक्शन एग्जाम्पशन जदि हमर किछि रिबेट अछि ताले हमें से रूल जदि फॉलो करबा ताले हम कम टैक्स दबाको पड़िबो. When a person takes shelter behind these sections provisions and rules and as a result reduces his tax liability it is called tax planning. ता माने गवर्नमेंट रो से जो रूल गुडा को जो रूल गवर्नमेंट हम पई करछि हमर बेनिफिट पई करछि हमर टैक्स बर्डन कमाय पई करछि किछि एग्जाम्पशन रखछि किछि डिडक्शन रखछि किछि रिबेट रखछि आमे गवर्नमेंट रो से रूल फॉलो करी जदि टैक्स लायबिलिटी कमायबा ताहले हम सेटा कहै टैक्स प्लानिंग. In tax planning maximum advantages is to take in all tax exemptions, deductions, concessions, rebate, allowances, other reliefs or benefit permitted by the act. तमन हमें किमिति टैक्स प्लानिंग करि परिबो ना हमर इनकम टैक्स किछि एग्जाम्पशन दोछि एग्जाम्पशन जति हमको अवेलेबल हे परिबो ना किछि डिडक्शन दोछि डिडक्शन नबा किछि कंसेशन दोछि कंसेशन नबा रिबेट दोछि रिबेट नबा अलाउंसेस नबा रिलीफ नबा ए सब जो सेक्शन गुडा को अछि ए सब जो रूल जाको अछि एग्जाम्पशन डिडक्शन रिलीफ रिबेट ए सब जो जिनस गुडा को रूल गुडा हेछि से रूल गुडा को हमें मानी कि हमें जदि हमर टैक्स लायबिलिटी कमेले ताहाले सेटा को हमें कहै टैक्स प्लानिंग. Tax planning is a legitimate right of the taxpayer. माने tax planning is the ultimate rights of the taxpayer. Every taxpayer has the right to decrease or reduce the tax liability without violating the tax law. आमे टैक्स लॉ को ठकी के टैक्स लायबिलिटी कम करले होबनी आमे टैक्स रूल को मानी के टैक्स लायबिलिटी कम करले चलिबो. In other words, tax planning can be done only if tax laws contain provision in respect of this. The concept of tax planning has originated from the very existence of certain exemptions, deductions, etc. For instance, in case of individual or HO, tax planning can be done by the following manner. By making the investment in specified permissible avenues eligible for deduction under section 80C up to maximum of 1,50,000. गोटे एग्जांपल देला आमे किमिति हमर टैक्स लायबिलिटी कम करि पाइबा किमिति टैक्स प्लानिंग करि पाइबा मनकर गोटे इंडिविजुअल के एचओ होचे मनकर मिस्टर एक्स होचे मिस्टर एक्स दरमा होचे 5 लाख अब तार बयस होचे 30,000 30 इयर्स मिस्टर एक्स रो बयस होचे 30 इयर्स तार दरमा होचे वर्ष को 5 लाख ता माने 2.5 लाख पर तार टैक्स पडिबो सी कोन करबो किछि पैसा एलआईसी रे डिपॉजिट करबो एलआईसी रे रखियोला हम ऊपर टैक्स पडिबोनी किछि हेल्थ इंश्योरेंस करबो हेल्थ इंश्योरेंस करे टैक्स पडिबोनी तो किछि लॉन्ग टर्म पोस्टल एफडी करबो जा ऊपर टैक्स पडिबोनी दैट मींस इमिति किछि जगह हम पैसा नै कि इन्वेस्ट करबा जोडी कि हमर 80 रे डिडक्शन मिल जिवो ता माने ए हिसाब रे को सेक्शन रे डिडक्शन कोन कले एक्सेप्शन ए सब रूल गुडा को मानि जदि हम टैक्स कमेबा ताले हम सेटा को पिला माने कोन टैक्स प्लानिंग. तापर नेक्स्ट आसला टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स अवॉइडेंस माने कोन इन द वर्ड ऑफ जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी tax avoidance is an art of reducing tax liability without breaking the law. That means tax avoidance is one type of tax planning. The main objective of tax avoidance is to reduce tax. That means the objective of tax planning and tax avoidance both are same. Both the aim of both these things is reducing the tax liability of the SSC. Thus, tax avoidance is an attempt to manage financial affairs by using colorable devices with the intentions of reducing tax liability. Many a time, tax avoidance involves attempt to reduce tax burden by taking advantages of certain loopholes or weaknesses in tax law that is known as
loophole tax planning. That means मने करो हमरो टैक्स प्लानिंग लूपहोल्स अछि लूपहोल्स माने कोन किछि डिमेरिट्स माने कोन गोटे पर्टिकुलर जिंस बदले हमरो टैक्स लो कोन किछि डिडक्शन एग्जाम्पल दोछि बा किछु जिंस बदले किछि भलसे मेंशन करेनी तो से जिंस गुडा को नै लूपहोल्स को इनकम टैक्स रूल रो डिमेरिट्स को नै कि जदि हम टैक्स कमे परले ताहले हम सेडा कहूजे टैक्स एवॉइडेंस को हम लूपहोल टैक्स प्लानिंग भी कहूजे टैक्स एवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग दीटा जाको पॉजिटिव इम्पैक्ट पके दीटा को लीगल जिंस टैक्स प्लानिंग भी लीगल टैक्स एवॉइडेंस भी लीगल आमे कोन भलो चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकु जाय कि नले कॉस्ट अकाउंटेंट पाकु जाय कि नले कंपनी सेक्रेटरी पाकु जाय कि नले जो माने टैक्स प्लानिंग करछथि किसी लॉयर्स भी टैक्स प्लानिंग करछथि ताको पाकु जाय कि नॉर्मल लोक माने कोन करथि ताकर टैक्स प्लानिंग बा टैक्स एवॉइडेंस करथि सेहि पय से माने कि पैसा भी चार्ज करथि जदि माने करो गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट गोटे लोकर 10,000 टका टैक्स कमे देला ताले से 1 की 2000 चार्ज करबो फी तो किसी प्रॉब्लम नहीं 10,000 टका टैक्स कमिला 2,000 टका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं गला 2 लाख टका टैक्स कमिला 20,000 टका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं गला प्रॉब्लम किसी नहीं कहना हमको तो टैक्स नॉलेज जଣା नहीं सेहि पे लोक माने चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकू कॉस्ट अकाउंटेंट पाकू कि कंपनी सेक्रेटरी पाकू कि प्रैक्टिसिंग लॉयर पाकू जाउछंदी टैक्स प्लानिंग करिया पई बा टैक्स रिडक्शन करिया पई क्लियर तापर हम देखियो मीनिंग ऑफ टैक्स इवाजन टैक्स इवाजन इज ए इलीगल कांसेप्ट टैक्स इवाजन इज प्योरली इलीगल कांसेप्ट but tax planning and tax avoidance are legal concept tax avoidance called tax planning is the rights of the customer rights of the SSC not customer rights of the SSC tax planning and tax avoidance these two are the rights of the SSC they can do with legal things but tax avoidance is pure tax evasion is purely illegal things tax evasion can be done by two ways either by increasing the expenditure means not increasing showing the more expenditure or by decreasing the income माने करो कोन हिची पिला माने हम टैक्स इवाजन दी प्रकार करि पारे नै किबि टैक्स इवाजन करि पारे ना नंबर 1 माने करो मोर रेवेन्यू बा इनकम आसला 10 लाख मु ता को 8 लाख कहि देली ता माने मोर सेल्स केते दिला रेवेन्यू माने सेल्स मु सेल करथिली पिला माने केतना सेल करथिली 10 लाख टका कहि देली 8 लाख ता माने मु 2 लाख टका बुझी बा मोर एक्सपेंसेस टोटल खर्च हिला 4 लाख किंतु मु खर्च कहूची 7 लाख ता माने मोर खर्च हेनी अधिक खर्च कहूची ता माने मोर एक्चुअली प्रॉफिट होता 10 रु 4 लाख गले 6 लाख पर मु टैक्स दबा कथा किंतु मु गवर्नमेंट कहूची मु 8 लाख सेल करी 7 लाख खर्च होइला आ लाख ऊपर टैक्स देली ता माने दी प्रकार हम ठकिले गोटे सेल्स कम देखौचे एक्सपेंसेस अधिक देखौचे ए हिसाब से हमें जानी सुनी टैक्स ठकुचे जानी सुनी टैक्स ठकेडा कहउचे टैक्स इवाजन इज ए इलीगल कांसेप्ट एंड इट इज ए ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस सो we should not evasion the tax it is illegal method of saving tax and makes the person liable to penalties and prosecutions ता माने जदि हम जानि सुनि टैक्स इवाजन करबा जदि इनकम टैक्स एक्ट जानिबो ताला हम ऊपर फाइन पकेबो पेनल्टी पकेबो हम ऊपर लीगल एक्शन या जो दरकार पला हम जेल को पठा जिवो टैक्स इवाजन refers to an excise attempt by the taxpayer for not paying the tax legally become due it is the general terms for efforts by the SSC persons who are liable to pay tax to avoid taxes by illegal means tax evasion usually involves SSC deliberately misinterpreting or cancelling the true state of their economic financial affairs to the tax authorities to reduce their tax liability and includes dishonest tax reporting that means से कौन होची ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करसे अपने पर्सन बाबू एसएससी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तार जहां भी आतिला से सब ठकी के देखौची से ट्रू एंड फेयर व्यू देखौनी से जानी सुनी गवर्नमेंट को ठकुची टैक्स दोनी इनकम कम देखौची एक्सपेंसेस अधिक देखौची इट इज प्योरली इलीगल a tax evader either pays less tax than what he is supposed to pay or doesn't pay any tax when he is legally liable to pay it as per the rules of the tax. This method for tax evasion are not showing income as its real level like under disclosure of income under disclosure of income से कौन करछि जानि सुनि टैक्स कम दवा पे चेष्टा करछि बा किछि भी टैक्स न देक रहि होछि जोटा कि हम कहै टैक्स इवाजन किमिति टैक्स इवाजन होछि इनकम कम देखौछि then inflation the expenses and thus reducing the real income inflation माने बढ़े दवा expenses को बढ़े दोछि जा द्वारा कि हमर टैक्स लायबिलिटी कमी दोछि manipulation of accounts to reduce the income manipulation of account
बुक ऑफ अकाउंट का चेंज कर दूचे बुक ऑफ अकाउंट को दिन 10,000 से लेथियो 9,000 लिखि दियो को दिन 15,000 से लेथियो 13,000 लिखि दियो को दिन 30,000 से लेथियो 27,000 लिखि दियो ए हिसाब रे मैनिपुलेशन भी चेंज कर दूचे रेंट मासो 10,000 दउथो मासो 15,000 देखौथो ए हिसाब रे मैनिपुलेशन कर दूचे वायोलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लॉस विथ इंटेंशन टू सेव टैक्स सेव करिया पई गवर्नमेंट रो रूल रेगुलेशन को टैक्स रो रूल रेगुलेशन को वायोलेशन करतो मानो नतो मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शंस माने आउ का नारे किनिबो आउ का नारे भाई नारे बाबा नारे निजर पैसा किंतु अलगा नारे रिलेटिव नारे किनिबो बेनामी ट्रांजैक्शन सब करिवो ए सब करिके टैक्स इवजन करिवो टैक्स इवजन इज ऑफेंस एंड इलीगल अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड हला सो आज हम कोन देखले ग्रॉस टोटल इनकम देन राउंडिंग ऑफ इनकम टैक्स प्लानिंग देन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवजन हला या सहित तुमर फर्स्ट टॉपिक सला तापर हमर सेकंड टॉपिक फर्स्ट यूनिट सरनी फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर सरला सेकंड चैप्टर आमे पढिबा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।